Sir, in charge, General Demonstration. Sir, AQ number 1097. In terms of Rule 3 of J&K Civil Services Temporary Services Rule 1961, sanctioned by Notification 416-F of 1961, dated 15th November 1961, it is inter alia provided that 3.1. A government servant shall be eligible for being declared as quasi-permanent if he has been in continuous government service for more than 3 years in a department which is not as a whole temporary. A. Employees may be declared quasi-permanent against permanent posts or such temporary posts which have been in existence for 3 years or more, and B. Against such temporary posts transferred from plan to non-plan establishment which have been in existence for 3 years or more on non-plan establishment. C. No person may be declared quasi-permanent against a plan post. 2. In a department which as a whole is temporary. A. Such posts of the department may be declared as quasi-permanent which have been in existence for 10 years or more and are born on non-plan establishment. B. Such of the employees of the department as are otherwise eligible for quasi-permanency may be declared quasi-permanent against the post declared quasi-permanent as per A above. C. No person in the department be declared quasi-permanent against a planned post. The operative rules do not provide for declaration of services of junior scale KAS officers as quasi-permanent. Instead, the rules mentioned below mandate the confirmation of probation for probationer junior scale JKAS officers, which is contingent upon passing the departmental exam. A. Rule 22(1)A of the Jammu and Kashmir Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1956. B. Rule 4 of the Jammu and Kashmir Combined Competitive Services Probation and Examination Rules 2000. C. Rule 16(1) of the Jammu and Kashmir Administrative Service Rules 2008. Part B. Rule 16 of SRO 386 mandates that probationers must pass the departmental examination within 2 years of their appointment for confirmation in service. The departmental examination of these officers could not be conducted due to the significant changes brought about by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. This act led to the reorganization of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 separate union territories, which required a comprehensive revision of the existing laws, statutes and regulations, including those governing the departmental examination. As a result, the syllabus for the examination had to be thoroughly revised to align with the new governance structure, administrative framework and updated legal provisions introduced in the Reorganization Act. In terms of Government Order number 1514 JK GAD of 2023 dated 30th 11/2023, a committee has been constituted to finalize the syllabus for the JKAS probationers departmental examination. Every effort is being made to expedite the finalization of the syllabus. Once the syllabus is approved, necessary steps for conducting the examination will be initiated without delay, ensuring that the probationers are assessed in accordance with the prescribed guidelines. The confirmation of probation for these officers, which is contingent upon the successful completion of the examination, will be processed promptly in line with the relevant service rules. Honorable Speaker, sir, Chief Minister साहब ने रिप्लाई जो दिया है मैं उससे मुतमईन हूँ। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये बड़ा एक इशू है, 2018-19 का बैच है, उनके एग्जाम्स जो हैं काफी डिले हुए हैं। मैं चाहता था कि हाउस के नोटिस में ये आए और गवर्नमेंट के नोटिस में आए, खास करके जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, रियासत के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, सबसे ऊपर जो लोकल हमारा कैडर है उसमें ये केएस के ऑफिसर आते हैं, और लेकिन काफी देर से इनके एग्जाम नहीं। और जैसे जवाब में भी आया 2023 में जो इसके लिए बनाया गया, लेकिन उसके सिलेबस के लिए किया गया, लेकिन उसके बाद भी 1 साल का डिले है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है ये प्रोसेस हो, और ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको जो सर्विसेज कर रहे हैं और स्टेट में सबसे ये अपनी जो हमारा लोकल है एलीट इसमें आता है, मेरी यही गुजारिश है कि इन सबको जल्द से जल्द जो है एग्जाम करके आगे किया जाए, और ताकि ऐसा भी कई जगह पे ऐसा जो इनसे जूनियर है वो इनसे प्रमोट हो रहे हैं ऊपर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने बात की वो दुरुस्त है।
हम भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हुकूमत बनने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों को हाथ में लेना शुरू किया है जो थोड़ी देर से डिले होते आए हैं। लेकिन ऑनरेबल एमएलए साहब को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें वक्त इसलिए लगा क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। साल 2000 के बाद पहली मर्तबा जो है सिलेबस रिवाइज हो रहा है, मतलब 25 साल के बाद। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी। उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश थी कि हमारा जो ड्राफ्ट सिलेबस है उसको बाकी स्टेट्स और यूटीज की सिलेबस के साथ जो है कंपेयर करके अगर कोई तब्दीली लानी होगी वो करें। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स शायद रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब से इनपुट्स वगैरह ली गई हैं। हमने दूसरे आईएएस अफसर से भी गुजारिश की कि वो इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। फाइनल ड्राफ्ट अब तैयार है। मैं ऑनरेबल मेंबर के जरिए से हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हम ये महीने के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। सिविल सर्विस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। 2008 में उमर साहब की सरबराही में जो हुकूमत थी उसमें एक कोटा फिक्स हुआ था डायरेक्ट रिक्रूट्स और फीडिंग सर्विसेज का 45-55। लेकिन सर 2016 में पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको रिवोक करके वो कोटा 50-50 कर दिया, जिससे इंजस्टिस हो गया। जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूट इसके साथ नहीं आता, ये इस क्वेश्चन के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका इस क्वेश्चन के साथ ताल्लुक नहीं है। सर जब हम खड़े होते हैं इस हाउस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं भाषण नहीं करना चाहते हैं। मेरे बड़े ही सीनियर और मेरे कुलीग इजाज साहब ने क्वेश्चन लगाया है केएस ऑफिसर, तो मैं रिकॉर्ड में बोला भी इन्होंने, और हालांकि सीएम साहब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, जेकेएस बोला। तो अभी केएस जो यहाँ कोई डेजिग्नेशन नहीं है, जेकेएस है। सवाल में भी केएस लिखा है और उन्होंने अपनी तकरीर में भी किया है, तो मैं रिकॉर्ड में दुरुस्त चाहता हूँ कि इसको जेकेएस लिखा जाए। थैंक यू। हाँ, कैसा सर AQ नंबर 198। मिनिस्टर इन चार्ज फाइनेंस। So AQ number 198. After reorganization of J&K, the apportionment of assets and liabilities is to be carried out as per the notification SO339 of GAD dated 30/10/2020. Most of the recommendations are implemented. As regards apportionment of public debt, the financial liabilities of rupees 2,504.46 crore are to be transferred to the UT of Ladakh. The matter has been taken up with the Ministry of Home Affairs and the UT of Ladakh. सर ये निहायत ही अहम क्वेश्चन है। मेरे ख्याल हम सबका कंसर्न है कि, और ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जानना चाहती है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर मैंने डिटेल्स मांगी थी, डिटेल्स यहाँ मिली नहीं हमें। एक तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि एसेट्स जो अर्स्ट वाइल स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, जब डिवीजन हुआ 2 यूटीज बनी, तो जो एसेट्स थे उनको किस तरीके से बांटा गया, ऑन व्हाट बेसिस? उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटा गया या एरिया के बेसिस पे बांटा गया? दूसरा सर, जो उस वक्त जो लाइबिलिटी थी, जो कर्जा था, कर्जेदार जो थे, उनको किस तरीके से बांटा गया? रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक कमेटी तश्कील की गई थी। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये बांटने का काम जो है उसको हाथ में लें, और कोशिश ये की गई थी कि एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे माहौल में जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, बजट वगैरह वो ट्रांसफर हो। और इसके लिए प्रोसेस जो है वो एक ऑफिशियल गैजेट के तहत पूरा करके 30 अक्टूबर 2020 को जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत ये सारे डिटेल्स जो हैं उस नोटिफिकेशन में हैं। मैं ये नोटिफिकेशन अपने कुलीग एमएलए साहब के साथ शेयर कर लूंगा। 300 मिनिस्टर इन चार्ज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। AQ number 1300. Sir, the indoor stadium Akhnur is not in deteriorated condition and is functional as on date, whereas the superstructure of pavilion building in the playfield of Palma was damaged. The sports ground of Degree College Akhnur has been upgraded recently by way of construction of various courts and VIP pavilion and seating tiers. Part B. The following upgradation and developmental works of sports infrastructure at GDC Akhnur have been completed
and handed over to college authorities. 1. Construction of pavilion for VIPs. 2. Construction of sitting tiers. 3. Construction of basketball court. 4. Construction of volleyball court. 5. Construction of handball court. 6. Construction of kho-kho court. 7. Development of cricket football ground. Pertinent to mention that the execution of the above works was done by Sports Council. However, the budgeting was done by Higher Education Department. Regarding the renovation, upgradation of the playfields, stadiums, feasibility shall be examined. Sir, the reply presented by the Honorable Minister is not satisfactory. It is incorrect, I must say. मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का विधायक हूँ, देखता हूँ जो स्टेडियम है सर, आउटडोर स्टेडियम पलवा में बना हुआ है, बिल्कुल डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है. डाइलैपिडेटेड शब्द भी कम होगा सर, है ही नहीं है. 2010 में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी सर. इंसिडेंटली मैं भी विटनेस था. उस समय आई वाज सर्विंग एज एसपी रूरल. ऑनरेबल मिनिस्टर के स्वर्गीय पिताजी आदरणीय श्री मदन लाल शर्मा जी उस समय उन्होंने इनॉग्रेशन की थी. हमारे एक और मेंबर ऑनरेबल मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं श्री श्यामलाल शर्मा जी, ये भी मिनिस्टर थे और उस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर RS चिप थे. स्टेडियम शुरू तो हुआ, काम खत्म नहीं हुआ सर. और आज भी अगर जाके ऑनरेबल मिनिस्टर वहीं से गुजरते हैं, इट इज टोटली डैमेज्ड. इट हैज नॉट बीन यूज्ड इवन वंस सर. एक बार भी यूज नहीं हुआ है. पब्लिक एक्सचेकर की डैमेज तो हुआ ही हुआ, मिस यूज मिस एप्रोप्रिएशन भी हुई. उसके साथ साथ जिनके लिए ये बनाया गया था हमारे यूथ, उनके काम भी नहीं आया और पिछले लगभग 15 साल से किसी काम का नहीं है. मैं इसमें जवाब चाहूंगा. बहुत ही अच्छा सवाल विधायक जी का. मैं इतना ही कहूंगा कि जो अगली दफा हम वहां से गुजरेंगे, मैं और विधायक जी साथ जाएंगे. वी विल सिट विद ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और बैठकर इसका निवारण करेंगे और अगली जो विजिट हम करेंगे जो जो कमियां हैं वो दूर करेंगे. चलिए ठीक. डॉक्टर भारत भूषण जी. आई वांट दिस इज misuse of public money and misuse of time also sir. मुझे इंक्वायरी चाहिए इसमें सर. आई वांट इंक्वायरी. अच्छा कोई बात. ये कहते हैं कि आपको साथ लेके खुद जाएंगे, उससे इंक्वायरी क्या बन सकती है बड़ी. मिनिस्टर साहब और MLA साहब, आप सुन लीजिए ना मेरी बात. मैं कहता हूं कि आपसे बढ़कर कौन इंक्वायरी करेगा. मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है. आप सुनिए ना MLA साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात. सुन लीजिए बात, सुन लीजिए. सुनो ना, जवाब सुन लो इनका. ऑनरेबल स्पीकर सर, हम इसको एग्जामिन कराएंगे और साथ विधायक जी को साथ लेकर जाएंगे. अगर जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी भी कराएंगे. बस ठीक है. डॉक्टर भारत भूषण. गुड मॉर्निंग सर. AQ 1074. मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट. Sir, AQ number 1074, total number of Safai Karamcharis working in various ULBs of Jammu and Kashmir, 7,353 numbers. B, yes, sir, out of total 7,353 number of Safai Karamcharis, many have completed more than 10 to 15 years of service and many are already working on permanent position. Only few are working as casual labor, Safai Karamcharis. Government has always adopted pro-labor policy within the ambit of law. The policy of regularization is under review in view of the Honorable Supreme Court judgment in state of Karnataka versus Uma Devi, wherein Honorable Supreme Court has laid down that any policy of regularization through executive orders, statutory orders and legislative orders and enactments is violate of Article 14, 15 and 16 of Constitution of India. Under Namaste scheme, various proactive
proactive items have been provided to sanction sanitation workers, visa PPE kits, gum boots, gloves, masks, etc. हेलो सर, जो मिनिस्टर साहिबा ने बताया नंबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो न्यू गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 250% पे एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। उसके मुताबिक ये क्या गवर्नमेंट उस पर करने जा रही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और मैंने पूछा था कि परमानेंट कितने हैं। परमानेंट जो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम परमानेंट है, ऐसा नहीं है। मेरे पास 3 अर्बन लोकल बॉडी में कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, लखनपुर, कठुआ और नगरी की 3 म्युनिसिपल बॉडी में 60% पोस्टें खाली हैं। और उसके साथ मैंने कहा था कि फैमिलीज के वेलफेयर के लिए क्या किया, तो ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि टूल किट्स देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए क्या है? वो इतना काम हमारा साफ सफाई का करते हैं, वो कोई भी नहीं कर पाता, और उनको हम बेजेस भी मिनिमम बेजेस भी नहीं देते हैं। बहुत शर्म की बात है सर। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो ऑलरेडी जवाब में आई हुई। अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने टोटल परमानेंट सफाई कर्मचारी